Hello, student. How are you all? Hope you all are doing well and you all are listening to your parents and studying hard. Here I'm back with my third part from atoms and molecules. That is, what is a molecule? So, in a general, we can say like a molecule is a group of two or more atoms that are chemically bonded together. And if we want to talk about the definition, then the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance is known as a molecule. Smallest particle of an element, like when when two or more atoms combine together, they form a molecule. So it is the smallest particle of a compound and element that is able to show its independent existence with all its properties. Its properties are visible, its properties are different. When they combine, they form a new property, and that is a molecule. Now we talk about the introductions of molecule that I already told you that it is a group of two or more atoms that are chemically bounded together or tightly held by the force of attraction. Atoms of the same elements or of different elements can join together to form molecules. These are explained to you. Coming to molecules of elements. Now, molecules of elements constitutes of the same type of atoms that we know, like particular element is there. For example, argon is there or helium is there. So, helium is having its atomic number 2 and argon is having atomic number 18. So when we talk about the molecules, then they'll be having same type of molecules which will make them. But not in the case of non-metals. These are the gases, noble gases. If we talk about the non-metals like oxygen, then oxygen is known as diatomic. It consists of two molecules. Like if we talk about like oxygen is having three atoms in a unit instead of two, so we'll get ozone. That is O2 is known as oxygen while O3 will be known as ozone. So the number of atom constitute a molecule is known as its atomicity. मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम का प्रेजेंट होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी बताएंगे कि उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. Metals and some other elements like carbon do not have a simple structure as they consist of a very large and indefinite number of atoms combined together or bounded together. Okay, so we can have a look at some non-metals like argon, which is monoatomic in nature, helium monoatomic, oxygen O2 diatomic, hydrogen H2 diatomic, nitrogen N2 diatomic, chlorine Cl2 diatomic, phosphorus P4 tetraatomic, sulfur polyatomic. Sometimes phosphorus is pentaatomic also in nature. Now coming to molecules of compound. As molecules are divided in elements and compounds, we have winded up our elements. Now we are switching towards the molecules of compound. Now atoms of different elements join together in a definite proportion to form a molecule of compound. In element, what was happening? Same type of atoms were combining. Over here, different types of atoms are combining together and they are forming a molecule. One example is given in table 3.4 where H2O, that means hydrogen and oxygen, are combining and they are giving the ratio 1 is to 8. So their atomicity also varies based on this thing. NH3, nitrogen and hydrogen combined, nitrogen is 14, hydrogen will be 3. CO2, carbon and oxygen, 3 and 8 ratio. Now this ratio, it's a particular pattern which is followed here. Formula is there through which the ratio is derived, that you will study in your higher classes. Now coming to activity 3.2. Now activity 3.2 is asking us like to find out the ratio of the numbers of atom in various compounds which are given in table 3.4. For example, water, ammonia, and carbon dioxide are there. Now
I'm taking the example of this. Over here we have taken example of hydrogen and oxygen. Ratio by mass is 1 is 1 and 8, 1 is to 8. Atomic mass unit will be 1 is to 16. Mass ratio or atomic mass will be 1 by 1 because रेशियो बाय मास जो होता है उसको डिवाइड करा जाता है एटॉमिक मास से, तो उनका रिमाइंडर क्या आ जाता है 1. सो सिंपलेस्ट रेशियो उनका बन जाता है 2. 1 बाय 1 का 2 बनता है. ऑक्सीजन 8 रहता है रेशियो बाय मास, वहीं एटॉमिक मास 16 होता है, 8 बाय 16. तो 8 1 8, 8 2 16. 1 बाय 2 रहता है वो 1 हो जाता है. Now what exactly happen when a compound or a molecule reacts with another? The compound and molecule reacts with one another and forms a different compound. Like compound या molecule react करेगा और बनाएगा दूसरे compound का जिसका जो proportion रहेगा वो proportion हमेशा constant रहेगा, ये याद रखना. Example, अगर हम एक real life example लेते हैं तो we always see 2 gram of hydrogen always reacts with 16 gram of oxygen and forms a water molecule H2O. Thus तो वाटर जो रहेगा वो हमेशा उसका मॉलिक्यूलर रेशियो रहेगा 1:8 का. 2/16, 2 1 2 8 सा. इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसके अंदर प्रोपोर्शन कभी नहीं बदलता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल बदल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक लाइक व्हाट इज एन आयन. सो बेसिकली compounds consist of metals or non-metals which are carrying charges on them, positive and negative charges. तो जो चार्ज स्पीशी होती है उसको आयन कहा जाता है. ये चार्ज पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में होता है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहा जाता है आयंस एंड एनायंस, एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कहा जाता है कैटायंस. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एनायन कैटायन में भी डिवाइड करके बोला जाता है. We take the example of NaCl, sodium chloride. It consists of the particles of positively charged sodium Na and negatively charged chloride particles Cl minus. So जो ions रहते हैं वो हमेशा singly charged atom contain करते हैं और उनके अंदर net charge जो रहता है वो उसी के through decide होता है. Some group of atoms are there which carry polyatomic ions which are shown in a table 3.6. Next, coming to importance of chemistry. That table point 6 I'll be showing you with that writing of chemical formulas. Now coming to importance of chemistry formulas. Now this importance of chemistry formulas or chemical formulas, this is not your topic. Your topic is writing chemical formula. But before going for that writing chemical formula, it is important for you to exactly know why chemical formula and chemistry are important. सो वी कैन से दैट केमिकल फार्मूलाज जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो शॉर्ट हैंड यूज़ होता है जो एलिमेंट को बताता है कंपाउंड के अंदर. पीरियोडिक टेबल जो है वो सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है जो रिप्रेजेंट होते हैं हर एक एलिमेंट्स के लिए. लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, इन सब के लिए सिंबॉलिक फॉर्म होता है जो रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है. Now if we talk about chemistry or chemical formula, there are three types of chemical formulas. One is molecular formula, second empirical formula, third is structural formula. If we talk about molecular formula, then it gives the number of elements present in a compound. It is always written in a symbolic form which is taken from a periodic table and written in a subscript form. Example is given for glucose. ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6 दैट वी ऑल आर अवेयर. बचपन से हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते आ रहे हैं जिसके अंदर हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लिखते थे. तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का पैटर्न है. कमिंग टू एम्पेरिकल फार्मूला. नाउ ये जो फार्मूला होता है ये हमें रेशियो बताता है कि कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ये फार्मूला यूजुअली हमें एनालिसिस या एक्सपेरिमेंटल डेटा के एनालिसिस के थ्रू मिलता है. लाइक एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज जो रहेगा वो CH2O लिखा आता है. एम्पेरिकल फार्मूला यूजुअली डिराइव होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से. नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला. नाउ स्ट्रक्चरल फार्मूला जो रहता है वो हमें एटम के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि कंपाउंड वो किस तरह से अरेंज्ड है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनके अंदर बॉन्ड्स किस तरह के हैं,
सिंगल, डबल, ट्रिपल, कोवैलेंट हाइड्रोजन किस तरह के बॉन्ड है, उससे हमें पता चलता है कि ये कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग है या क्या क्या कंटेंट करता है. Now this is part of your NCERT page number 37, like writing chemical formula or how to write chemical formula. So there are 3 points which are need to be kept in mind while writing a chemical formula. The valency or charges on iron must be balanced. Now valency या charges जो रहते हैं, valency क्या होती है, वैलेंसी वो रहती है जो एक एटम के बाद में बचती है. लाइक एक होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 2818 करके लिखा जाता है. उसके अंदर जब 2818 के बाद कोई भी एक एलिमेंट एट नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बचते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एटॉमिसिटी कहलाती है. वो वैलेंसी डिसाइड करती है चार्ज का, तो वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए आयन के ऊपर. नेक्स्ट, जब एक कंपाउंड मेटल या नॉन मेटल कंसिस्ट करता है तो उसका नाम या सिंबल जो रहता है मेटल का वो हमेशा फर्स्ट वाले से लिखा आता है. लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम एंड ऑक्साइड है, तो हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल का ध्यान में रख के लिखते हैं. लेकिन अगर सिर्फ नॉन मेटल है तो वो दोनों लिख सकते हैं. लाइक calcium oxide non metal, sodium oxide, sodium is non metal. Iron sulfide, iron is a metal and sulfide is a non metal. तो ये हमेशा पहले लिखा है. अगर मेटल नॉन मेटल साथ में तो मेटल हमेशा पहले लिखते हैं, लेकिन नॉन मेटल है तो उसमें ऑक्साइड, सल्फाइड्स, हाइड्राइड्स, क्लोराइड्स को लास्ट में लिखते हैं. राइट एंड लेफ्ट साइड से भी याद रख सकते हो आप लोग. थर्ड पॉइंट, in compounds formed with polyatomic ions the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. अब अगर कंपाउंड के अंदर कोई भी एक आयन पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक यानी उसके अंदर ज़्यादा आयन प्रेजेंट है, 4, 5, 6, 10, तो उसको क्या करते हैं हम ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखते हैं जो हमें इंडिकेट करता है उसका रेशियो कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर एक भी ब्रैकेट, अगर नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन एक है, जैसे हमने NaOH लिया तो सोडियम के अंदर Na2 प्लस OH माइनस है तो Na2 प्लस है, तो ये चल जाएगा एक सिंगल पॉलीएटॉमिक. लेकिन अगर दोनों के ऊपर होता चार्ज तो फिर उसको ब्रैकेट में करके लिखाता. Now here is that table 3.6 which we studied while going through that ion topic. Now some common simple and polyatomic ions. Name of ion, symbol. Name is sodium, potassium, silver, copper, Na plus, K plus, AgCu. Magnesium, calcium, zinc, iron, copper, aluminium, iron. Now here I have told you the name of ion. Now coming to non-metallic elements and their symbol. Hydrogen, hydride, chloride, bromide, iodine, oxide, sulfide, nitride. Now सल्फाइड IDE है तो 2 माइनस, सल्फेट है तो कैसा रहेगा वो आप देख लेना. I'll show you. Next is polyatomic ions and their symbols. Aluminium hydroxide, nitrate, hydrogen carbonate, sulfate, that is hydrogen carbonate, HCO3, then carbonate, sulfite, phosphate. Now here ammonium hydroxide NH4, nitrate NO3, hydrogen carbonate HCO3, carbonate CO3 2 minus, sulfite ITE SO3 2 minus, sulfate SO4 minus, and phosphate PO4 minus. Now this was about some simple polyatomic ions. Now there is a formula of some simple compounds is given. This is the simplest formula which we can learn through our writing pattern. Like while writing the chemical formula for compound, जो constituent elements होते हैं और उनकी valencies होती है उनको हमेशा नीचे लिखा जाता है कंपाउंड और इसके नीचे उसकी वैलेंसी, कंपाउंड इसका सिंबल, इसकी वैलेंसी, कंपाउंड इसका सिंबल, उसकी वैलेंसी. और जो कंपाउंड है उसकी वैलेंसी दूसरे कंपाउंड के साथ में
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाती है जिससे उसका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ना हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। जब उन्हें क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला जो बनेगा H1C1, तो हम 1 को निगलेक्ट करते हैं, लिखते नहीं हैं। HCl में ऑब्वियस है कि वो 1 1 है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। Now symbol is H and O, valency is 1 and 2. Crossover, it will be H2O. That will be water. Next is for hydrogen sulfide, HS, hydrogen H, sulfide S. 1 and 2, H2S. That will be hydrogen sulfide gas. Next formula for carbon, tetrachloride. Tetra means 4. तो कार्बन 4 है, क्लोरीन 1 है, तो वैलेंसी होती है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, दैट आई विल शो यू इन माय नेक्स्ट स्लाइड। इसको कार्बन 4 क्लोरीन 1, तो Cl4 माइनस। अनदर एग्जांपल आई हैव टेकन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na1 CO3 माइनस, तो Na2CO3। एल्यूमिनियम सल्फेट Al3 plus SO4 2 minus Al2 SO4 bracket 3, because 4 is already there and 3 is coming. Before CO3 1 था तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे पावर ज़्यादा है इसलिए उसको ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH2 plus OH1, तो कैल्शियम ब्रैकेट में हाइड्रोक्साइड 2। देन अमोनियम सल्फेट, सो NH4 1 SO4 2, NH4 ब्रैकेट में आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, SO4। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2 प्लस OH माइनस, Mg ब्रैकेट OH2। now this is just for your explanation, like symbol, charge and formula। इस तरह से लिखेंगे अगर एग्जाम में तो that will look very neat and it will be easier for you। तो सबसे पहले क्या है, सिंबल क्या आ जाएगा, Mg मैग्नीशियम के लिए, सल्फाइड के लिए S। चार्जेस मैग्नीशियम में 2 प्लस होता है एंड सल्फाइड में 2 माइनस होता है। फॉर्मूला हो जाएगा Mg2S2 और Mgs, तो हम मोस्टली Mgs लिखते हैं। नेक्स्ट कॉपर हाइड्रोक्साइड Cu एंड OH। Cu 2 प्लस होता है, OH 1 माइनस होता है, Cu ब्रैकेट में OH2। सिंबल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के लिए AlBr, Al 3 प्लस होता है, ब्रोमीन 1 होता है, तो AlBr3। now this was about the topic। if you want to know like of how we are writing the names and symbols and what is valency and all these things, so you can refer page number 51 from our NCERT book, where composition of atoms of the first 18 elements with their electronic distribution in various shell is given. From hydrogen till argon, it is already given in the chapter, like hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, and 19 and 20 will be potassium and calcium. So if you want, you can refer this page number 51. This will help you for your chapter number 4 also. I know writing a chemical formula is not an easy task, but in my next slide I'll explain you again with more examples and more patterns. Till then, you take care, stay home, stay safe, study from your NCERT book, study from whatever references or notes you are having, or if you want to follow your online classes, whatever you want to do, but you have to study being part of class 9th. Till my next video, take care, stay safe, listen to your parents. Bye bye.